Good evening everyone, welcome to Unacademy. So guys, in this session I'm going to discuss questions from slot 1 of CAT 2017, that is from quantitative ability section. So this is the part 2 of the section जहाँ पे मैं बचे हुए questions complete करने वाला हूँ. So we are just left out with the half of the questions. In part 1 I have covered half of the questions. So let's begin. Just a minute. Okay, so hopefully I'm audible. Okay, so those who are watching me for the first time, let me quickly introduce myself. My name is Shyam Jagrut. I have been training the student for last 8 years. I have trained more than 7,000 students for MBA entrance exams, and I do teach the students for quantitative ability, logical reasoning, and data interpretation. So guys, simple agenda for today's session. We are going to practice questions from CAT 2017, the actual CAT paper. Slot 1 में ये questions आए हुए हैं. Let's begin. Those who are new to our channel, quickly subscribe to this channel, that is Unacademy CAT4MBA. You can also join our Telegram channel where you'll be getting the PDF notes of each and every session that we conduct here on YouTube, as well as the sessions that we conduct on Unacademy Plus platform. Those who are willing to attain my special session over there Unacademy, they can just go to Play Store and download this Unacademy the learning app, and you'll be able to attain all these special sessions free of cost. At the same time, who are willing to go for the plus subscription of Unacademy, they can use this code SHAM1 to avail 10% of the discount. So guys, let's begin. Here's the first question. Good evening everyone. So let's begin. Try to solve this question. If anyone have answer for this question, they can quickly drop in the comment section. So a solid metallic cube is melted to form 5 solid cubes whose volumes are in the ratio 1:1:8:27:27. So the percentage by which the sum of the surface areas of the 5 cubes exceeds the surface area of the original cube is nearest to. So all of you must be knowing the formula for surface area of cube. Surface area of cube is 6 times into a square, or you can say 6 into side square. Cube has 6 surface. And all of you must be knowing the surface area of the cube is 6a square. That's the only thing you need here. इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी जरूरत नहीं है. तो उसके अलावा मीन्स वॉल्यूम तो डेफिनेटली रिलेटेड टू वॉल्यूम पहले दिया है, बट टू सॉल्व दैट क्वेश्चन द परसेंटेज चेंज के लिए हमें सिंपली सरफेस एरिया के बारे में क्वेश्चन है. एंड ये जो वॉल्यूम है, इनका वॉल्यूम का रेशियो दिया है 5 क्यूब के वॉल्यूम. सो पांचों का मिला के एक बिगर क्यूब का वॉल्यूम होगा, राइट. तो दिस इज V1, V2, V3, V4, V5. तो ये पांचों वॉल्यूम मिला के व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? इट इज a क्यूब. So if we add all these values, now look at the values carefully. 1 is perfect cube number, this is also perfect cube number, this is 1 cube, this is 1 cube, this is 2 cube, 3 cube, 3 cube, right. If we add all these numbers, 1 plus 1 plus 8, 27 plus 27 is 54, 54 plus 10 is 64. So total volume अगर 64 है, which is a cube of 4, right.
So what is the original surface area? It was 6 times of 4 square. Now the new surface area will be 6 times of 1 square plus 1 square plus 2 square plus 3 square plus 3. And you can just take the ratio of the new surface area and the original surface area to get the percentage increase कितना हुआ है, ये अगर हमें देखना है. You can easily do that. 6 will get cancelled, so यहाँ पे आ रहा है 24 और 1 plus 1 plus 4 plus 1 plus 1 plus 4 plus 9 plus 9. 18, 20, 24. Sorry, just a minute. This was 6 times of 4 square times of 6 gets cancelled, sorry. 4 square is 16. Now this addition comes out to be 24. So that is 2 t comes out to be 50%. 50% इंक्रीज कैसे आया? अगर पहले सरफेस एरिया 2 था तो अभी 3 हो चुका है. सो देयर इज इंक्रीज ऑफ 1 इंक्रीज कंपेयर टू 2. 1 by 2 into 100, that comes out to be 50%. That was an easy question. So let's move to the next one. Try for this. Okay, so let's begin with the next question. A ball of diameter 4 cm is kept on the top of the hollow cylinder standing vertically. The height of the cylinder is 3 cm, while the volume is 9 pi centimeter cube. A really interesting question. तुम्हें थोड़ा सा डायग्राम इमेजिन करते आना चाहिए एंड बेसिक्स तुम्हें फॉर्मूले पता चाहिए. दैट्स इट. स्फीयर एंड cylinder. So the most interesting thing is the cylinder is hollow. Okay, तो ऊपर कोई surface नहीं है उसके, right? So that's the hollow cylinder. इसका हाइट दिया हुआ है हमें. हाइट इज 3. And what is the volume of cylinder? Volume is pi r square into h. So volume is 9 pi and this is pi into r square into 3. That simply means the radius of the cylinder is root 3. 3 3s are 9. So radius is root 3. That's what we can conclude. Now look at this. इस पे हमने एक स्पीयर रख दिया जिसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर है. मतलब स्पीयर का डायमीटर तो 2 सेंटीमीटर है, राइट? तो 2 सेंटीमीटर विच इज मोर देन रूट 3. रूट 3 से तो ज्यादा आएगा, राइट? तो अगर हम यहाँ पे स्पीयर रखेंगे तो इट विल लाइक दिस.
कुछ पार्ट ऑफ द स्पीयर नीचे चला जाएगा, दिस पार्ट। अब हमें ये नहीं पता कि ये कितना पार्ट नीचे गया, एंड वी नो दिस हाइट इज h, दिस इज 3। हमें सिर्फ ये निकालना पड़ेगा कि ये कितना पार्ट नीचे गया। ऑफ कोर्स दैट टोटल इज डायमीटर तो हमें ऑलरेडी पता है 4, तो 3 + 4 इज 7, बट ये तो नीचे चला गया। ये डिफरेंस अगर हमें पता चल जाता है कि ये कितना पार्ट है जो नीचे, ये हाइट हमें, क्योंकि बेस से हमें इस टॉप पॉइंट की बेस से हाइट चाहिए, तो डेफिनेटली 7 से कम आएगा थोड़ा सा, ये जितना भी होगा उतना 7 से कम। लुक एट दिस हाइट इज 4, दिस हाइट 3, तो हमें 4 + 3 7 में से ये जो डिफरेंस आएगा, लेट्स टेक इट एज x, तो ये x माइनस करना पड़ेगा। योर आंसर मस्ट बी 7 - x, राइट। तो लेट्स ट्राई टू गेट द वैल्यू ऑफ x। x कैसे मिलेगा? टू गेट इट, चलो लेट्स ट्राई। रेडियस वी नो, this radius is √3 x। तो एक काम करते हैं, सेंटर से लेते हैं, ऊपर से, सेंटर से नीचे तो 2 है हमें पता है, तो यहां से ये जो रेडियस रहेगी, दिस इज कैपिटल R वी ऑलरेडी नो दैट इज 2, एंड दिस इज √3, this is root, definitely you can get this। Let's call this triangle as PQR। so in triangle PQR, this is 2, this is √3। by applying Pythagoras theorem you'll get PQ as 1, ये 1 और ये ऊपर का 2, तो ये 3 हो गया, और ये डिफरेंस जो है x का वैल्यू भी हमें मिला 1, डेफिनेटली 7 - 1, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7 - 1, दैट हैज टू बी 6 सेंटीमीटर, राइट। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 6। In case of any doubt, you can quickly drop in the comment section. Let's move to the next thing. Let ABC is a right angle triangle with BC as a hypotenuse. The length of AB and AC are 15 km and 20 km respectively. The minimum possible time in minutes required to reach the hypotenuse from A at the speed of 30 km/h. Okay, so let's draw right angle triangle ABC, where BC is the hypotenuse. Let's take this point as A. AB is 15 and AC is 20. तो A से स्टार्ट करना है, हाइपोटेनस पे जाना है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू रीच द हाइपोटेनस? तो एनी पॉइंट ऑन हाइपोटेनियस, whichever is the shortest distance, whichever is the closest one। तो डेफिनेटली हाइपोटेनस की ये जो कॉर्नर पॉइंट लोग, ये 20 किलोमीटर दूर है, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, which will be the shortest distance। what do you need to do? You need to draw ups on hypotenuse, and this is the distance to reach the hypotenuse, that is the shortest distance to reach the hypotenuse is AD। एंड अगर मुझे AD का लेंथ पता चल जाए तो डेफिनेटली मैं बता सकता हूं कि कितना टाइम लगेगा वो डिस्टेंस कवर करने के लिए। ऑल द वैल्यूज आर इन किलोमीटर्स, सो एंड द स्पीड इज 30 km/h, and with the speed of 30 km/h I need to travel the distance AD। अब there are two ways to solve this। एक तो तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल भी यूज कर सकते हो। What is the area of triangle ABC? That is the best way to do। Otherwise तुम सिमिलैरिटी से भी इसको कर सकते हो। डेफिनेटली कौन से ट्रायंगल सिमिलर है? दिस बिगर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर। अगर सिमिलैरिटी से करना है तो ये ऑप्शन है गाइस, जिनको सिमिलैरिटी से ये समझ में आता है दे कैन डू दिस। ट्रायंगल ABC is similar to this triangle
ए डी सी। अब देखो यहाँ पे अगर ये दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है, ओरिजिनल ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल इज सिमिलर, राइट? तो ओरिजिनल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस जो है वो BC है एंड ADC इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस AC। ये रेशियो हमेशा कौन सा रहेगा? अब इस ट्रायंगल में कॉमन एंगल ये है C के अपोजिट, बिगर ट्रायंगल में AB है एंड स्मॉलर ट्रायंगल में AD है। तो दिस रेशियो मस्ट बी सेम, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है इसलिए। सो BC इज ये 20 है, 15, so definitely this is 25. You can get BC as 25. 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 plus 225 625, which is the square of 25. पाइथागोरस थ्योरम से पहले BC हमने निकाला, that is 25. Then AC is 20 and this ratio must be equal to AB is 15 and AD हमें कैलकुलेट करना है, तो दिस विल बी 5/4, 5 से डिवाइड करो, यहाँ पे आता है 3. We'll get the AD as 12. This is one way to get. Okay, अगर किसी को सिमिलैरिटी में कंफ्यूजन होता है या फिर थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो तो डेफिनेटली सिमिलैरिटी आना चाहिए, बट अगर इस डायग्राम में सिमिलैरिटी लेने में कंफ्यूजन हो रहा है तो वन अदर वे यू कैन फॉलो इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. The area of triangle ABC. What's the area of triangle ABC? It is half into 20 into 50, right? Which comes out to be 150, and that must be equal to half into BC into AD. ये भी उतना ही आना चाहिए because this is base and this is height. ऐसे भी तुम AD निकाल सकते हो. So BC is 25 into AD to half must be equal to 150. That's the other way to do. 25 का 6 times 6 into 2. AD must be 12. But anyways, अगर हमें AD मिल गया, so distance is 12 kilometer that need to travel to reach hypotenuse, or the closest point on the hypotenuse to A is this D, a perpendicular drawn from A to the hypotenuse. So distance D with the speed of 30 km per hour, how much time it will take? The question, time travel is distance upon speed, comes out to be 12/30. और 12/30 किस में आया? आवर्स में. 1 hour में 60 मिनट होते हैं. अब we want the answer in minutes, so final answer in minutes will be 12/30 into 60. Comes out to be 24. Right? That was an easy thing. Let's go to the next thing. Try for this. Okay, so let's try. So first thing, geometric mean, G is the geometric mean between X and Y. That simply means geometric mean के लिए क्या होगा? G का value होगा under root of X, right? And we are supposed to find what is the value of log of 6, log of G to the base 6. Okay, first thing we are given with log of X to the base 3 is A. बिल्कुल easy question है ये logarithm का guys. And log of Y to the base 12 is also A. So can I get the value of X? X is 3 to the power A. That's the basic rule of log. And here Y will be 12 to the power A.
right? Then we are supposed to find the value of log of g to the base 6, and we know g is the geometric mean of xy, that is g is under root of x into y. We can write this as log of under root of x y to the base 6 comes out to be half of log of x to the base 6 plus log of y to the base 6. What we can do, log of x into y को हम सेपरेट करके लिख सकते हैं log x plus log y. That's the formula. लॉज ऑफ लॉगरिथम में अप्लाई कर रहा हूँ जस्ट यहाँ पे. x का वैल्यू रख देते हैं 3 to the power a, so I'm getting half of log of 3 to the power a to the base 6 plus log of y का वैल्यू है 12 to the power a to the base 6. तो ये जो न्यूमरेट इंडेक्स जो है वो आगे आ जाता है a, that will come common as well. This will be a by 2 in bracket log of 3 plus log of 12. दोनों का बेस 6 है. 3 plus 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है. 3 into 12 is 36, which comes out to be a by 2 into log of 36. 36 to the base 6. 36 is 6 square. So what you can write, final step, it will be, I'll write here, a by 2 into log of 6 square to the base 6. 2 आगे आ जाएगा, get cancel, log 6 to the base 6 will be 1. So final answer will be just a. That's an easy question on logarithm you can get. Really a simple question. Let's move to the next. Let's try for next. X plus 1 is equal to x square. Then what is the value of x to the power 4? Simple, a quadratic base, quadratic x is greater than 0, that we already know. If we solve this, x plus 1 is equal to x square. चलो quadratic 6 से solve करते हैं. X square minus x minus 1 must be equals to 0. So if I put the values, if I compare it with ax square plus bx plus c is equal to 0, we know the formula for the roots of the quadratic equation is minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a. बिकॉज यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज नहीं मिलेंगे हमें, कुछ फैक्टराइजेशन से नहीं आएगा. यू नीड टू यूज द फॉर्मूला. a is 1, b is minus 1, then c is also minus 1. So if I put it here, minus b will be 1 plus minus under root of what will be the b square minus 4ac. Minus 4ac will be positive, b square is 1 plus 4 हो जाएगा यहाँ पे, divided by 2 into 1, which comes out to be 1 plus minus root 5 divided by 2. Now listen, root 5 will be 2 point something. अगर 1 minus root 5 करोगे तो नेगेटिव नंबर आएगा. As we know x is greater than 0, that simply means x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 plus root 5 divided by the first thing you will get, that is x is 1 plus root 5 divided by 2. and अभी हमें x का वैल्यू नहीं पूछा है, हमें वैल्यू पूछा है what is the value of 2 into x to the power 4, right? So let's solve it. This will be twice of, पहले तो डिनोमिनेटर में मैं कर देता हूँ 2 into 2 into 2 into 2, 4 टाइम्स हो गया. देन ऊपर आएगा 1 plus root 5 bracket to the power 4. Let's do it that later, but for sure यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया. Now to solve this one, what I can do is, first of all I'll do
1 plus root 5 whole square into 1 plus root 5 whole square. तो क्या मिलेगा हमें 1 plus root 5 का ब्रैकेट टू द पावर 4. तो यहाँ पे क्या आएगा 1 plus 5 a square plus b square plus twice ab, that is 2 root 5. This will be the same answer. Okay, so what I can do, I can write it as 6 plus 2 root 5 whole square divided by 8. Now 6 plus 2 root 5 whole square को अगर हम सॉल्व करेंगे, 6 square is 36 plus 2 square and root 5 square will be 5. 2 square 4 into 5, that will be 20, plus twice of 6 into 2 into root 5. So twice of 6 into 2 is 12, twice of 12 is 24, 24 root 5. This divided by 8, so this is 56 plus 24 root 5 divided by 8. 8 sevens are 56 and 8 threes are 24, that is 7 plus 3 root 5 comes out of the last answer option, which is answer D. The calculations were quite tricky, but the question is not that tough. You can definitely manage. The only thing is you need to use the quadratic equation. Quadratic equation का question था simple, guys. Just by looking at, you can try to solve it by quadratic. तो definitely दो रूट्स आएंगे, एक नेगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है. तो x is greater than 0 हमें दिया है, तो रूट इज पॉजिटिव. You can get the value of twice of x to the power 4. एंड कैलकुलेशन थोड़ा सा a plus b होल स्क्वायर तुम यूज करोगे तो डेफिनेटली नंबर्स तो पता है हमें डायरेक्टली, तो डेफिनेटली ये कर सकते थे. डुएबल क्वेश्चन, इजी वन. Move to the next. Try for this. The value of log of this one. चलो so solve करके देखते हैं सीधा. What we can do, ये तो 7 है, बस ये वैल्यूज हमें करने हैं एडजस्ट. Can write this as log of 5 to the power half to the base. This is 0.2's cube, right? 0.2 cube is 0.008. 2 cube is 8, right? So I can write this as 0.2 cube. And ये index जो होते हैं ये आगे आ जाते हैं, logarithm, right? Then to solve the next one, what I can do is log of 81 is 3 to the power 4 and root 3 is 3 to the power half, and again ये इंडेक्स आगे आ जाएंगे. ये तो सॉल्व ही हो गया गाइस. log 3 to the base 3 बचेगा, वो तो 1 हो गया, एंड उसमें से हमें माइनस करना है 7. दिस विल बी 1/2 divided by 3 into log of 5 to the base 0.2 plus 4 divided by half into log of to the base 3 minus 7 1. Okay, this will be 1/6. 2 नीचे जाएगा, 1/6 into यहाँ पे क्या आएगा 0.2 को मैं लिख सकता हूँ log of 5 to the base 1/5. Then plus this will be 8 minus 7, that comes out to be 1 only, right? So the last step is just to find 1/6 into log of 5 को 5 to the power 1 को मैं 1/5 to the power -1 लिख सकता हूँ, and this will be 1/5 in the base, so just -1 आगे आ जाएगा, so it will be -6 basically, and यहाँ पे +1 तो है. Final answer will be -1/6 plus 1 comes out to be 1 minus 1/6 is
5/6. That's answer option C. Let's go for the next. Try for this. Nine to the power 2x or 2x minus 1 minus 81 to the power x minus 1. This must be equal to 1944. Third indices का question है guys. Just indices तुम्हें आते हैं, तुम can easily solve this. So can I write this as 3 square? 9 I can write as 3 square to the power x minus 1. 81 I can write it as 3 to the power 4 bracket to the power x minus 1. This must be 1944. Okay, so let's do this. This will be 3 to the power 4x minus 2 minus 3 to the power 4x. Simple basic laws of indices. Surds and indices में सारे laws हैं. Knowing 1944. Okay, after that this is 3 to the power 4x upon 3 square. जब बेस सेम है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं 4x minus 2. तो यहाँ पे 4x minus 2 उसको मैं रिवर्स में यूज कर रहा हूँ. माइनस 3 to the power 4x डिवाइड बाय 3 to the power 4. राइट. चलो लेट्स डू न्यूमरेटर सेम कर देते हैं, सॉरी डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं. डिनोमिनेटर सेम करना है. यहाँ पे 3 to the power 4 है, मैं यहाँ पे 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, ऊपर भी 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ. एनीवे जैसे तुम्हें लिखना है. देन दिस विल बी 3 to the power 4x plus 2 माइनस 3 to the power, या फिर चलो एक काम करते हैं 3 to the power 4x कॉमन ले. 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में आएगा 3 to the power. Right, 9 minus 1 is 8 and it must be 1944. So I'll write here the last few steps. So 3 to the power 4x on 3 to the power 4 must be equal to into 8 must be equal. I'll just divide it by 8. 8 2s are 16, 8 are 32, 24, 243. So 3 to the power 4x must be equal to divided by 3 to the power 4, and this is nothing but 3 to the power 5. 243 is 3 to the power 5. 3 into 3 into 3 5 times. So totally 3 to the power 4x I'm getting this as to the power 9, and definitely 4x is 9. 4x 9 must be by 4. Answer option B. That's again an easy question. You can have indices. Definitely ये questions CAT में करने ही चाहिए. Let's go for the next. Okay, this one is related to counting and really a tricky question you can say. थोड़ा सा manually सोचना पड़ेगा because इसमें. So we are given with the equation that is x minus y minus z is 25. Then x, y, z are the positive integers such that x is less than 40, y is less than 12, and z is also less than 12. So what I'll do, I'll just modify this equation. Can I write this as x is equal to 25 plus y
plus z, right? So let's take case 1. The first case, I can have x as 40, right? क्योंकि x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 40 होना चाहिए, राइट? एंड x अगर लेस, x इक्वल टू 40 ले रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग x 39 भी हो सकता है, x कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी 40, इट कैन बी 39, यू कैन गो अहेड विथ solving. X can be 39, then you can take a few more cases, x as 38, ठीक है? there are different scenarios. अब ये कितना भी जा सकता है, राइट? नीचे, बट डेफिनेटली ये भी x और y और z के वैल्यूज भी लेस देन और इक्वल टू 12 है, सो कुछ पॉसिबिलिटीज कम होंगे. लिसन नाउ, अगर इफ दिस इज द केस, x is 40, that simply means y plus z must be 15. In this case, y plus z must be 14. In this case, third one, y plus z must be 13, right? If this is the case, fourth case, x as 37, that simply means y plus z must be 12. अब देखो, तुम ऐसे करते जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा. फिफ्थ केस में जब मैं x का वैल्यू 36 लूंगा तो y प्लस z दोनों मिला के सिर्फ 11 हो सकता, राइट? देयर आर मेनी केसेस अहेड. ओके, नाउ लिसन, if we go for this, how many ways y plus z can be 12? Sorry, y plus z can be 15. y plus z 15 मुझे लाना है कि कैसे कैसे 15 आ सकता है. सुनो, these are positive integers, means at least 1 तो होना पड़ेगा. If y is 1, z is 14. y is 2, z is 13. और सारे लिखते में लग रहा होगा कि ये 14 होगा, ये 1 होगा. इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज x एंड y एंड z आर लेस देन 12. ओके, सो ये लास्ट केस कैंसिल हो जाएगा. 13 और 2 भी नहीं चलेगा और ये भी कैंसिल हो गया. 1 प्लस 40. क्लियर? तो कौन से चलेंगे हमें? 3 एंड 12, दैट इज पॉसिबल. आई विल स्टार्ट विथ 3. तो बेसिकली अगर हम सारे ट्राई करेंगे, इफ आई वांट टू राइट ऑल दिस नंबर्स, तो 1 से लेके मैं अगर ऐसे लिखते जाऊंगा 1, 14, 2, 13, 12, 4, 11, 5, 10, 6, 9, 7, 8. This is in pattern basically. So 8, 7, 9, 6 चलते रहेगा. 10, 5. At last this can be 11, this can be 12. So if you count this, ये starting के दो गए, last के दो गए. हमने 2 से स्टार्ट किया. 14 minus this will be 10. 10 ways to, right? I'll not write all. You can start from 3 and go till 12. 3 to 12 चलेगा. Cannot be 1, 2 and 13, 14. तो इसके 10 वेज बने. नाउ लेट्स काउंट फॉर दिस. y plus z 14 कितने वेज में आ सकता है? y plus z 14. तो इफ आई वांट y plus z 14, 1 and 13 नहीं चलेगा. 2 and भी चल सकता है. 12 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, राइट? देन 2, 12 चलेगा. जस्ट 1, 13 नहीं चला. देन 2, 3, 4, 5, 6, 7. तुम कहाँ तक जा सकते हो? 12 to 13, 13 and 1. सो ये कैंसिल हो जाएगा. सो 1 से लेके 13 तक 2 कैंसिल हो रहे हैं. ये आएंगे 11. तो गाइस, इट लुक्स कि ऐसे तो हमें सारे मैन्युअली निकालने पड़ेंगे फिर, राइट?
बट इफ यू ट्राई फॉर द नेक्स्ट वन, लिसन नाउ, यहाँ पे थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड हो गया क्योंकि मेरे पास 12 के ऊपर के नंबर्स आ रहे थे. नाउ लिसन, फ्रॉम नेक्स्ट थर्ड केस ऑनवर्ड सीधा सीधा तुम काउंट कर सकते हो. देखो y प्लस जेड मुझे 13 चाहिए, तो 13 अगर चाहिए तो 1 और 12 भी चलेगा और 12 और 1 भी चलेगा, तो सीधे सीधे इसके 12 वेज आ जाएंगे. इन नॉट टू राइट इट, इसके लिए y प्लस जेड अगर 12 चाहिए, इसके लिए सीधे सीधे मुझे 11 वेज मिलेंगे. इसके लिए मुझे 10 वेज मिलेंगे एंड सो ऑन. तो करते जाओगे तो लास्ट में सिर्फ 1 वे मिलेगा, राइट. So you need to add all the numbers from 1, 2, 3 and so on till 12 and plus उसमें जो starting के थे 10 plus 11, ये starting के दो and उसके बाद write it in reverse. Just a minute, explain one more time in case of any confusion. सुनो, initially सबसे पहले हमें कितने वेज मिले 10, फिर सेकेंड केस में हमें कितने मिले 11, ये हुआ 21. नेक्स्ट केस हमें वापस कितने वेज मिल रहे हैं 12 मिल रहे हैं. उसके बाद फिर एक एक कम होगा, सो 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस एंड सो ऑन टिल 1 तक जाएगा. कैन इजीली ऐड दिस नंबर्स फ्रॉम 1 to 12, दैट इज 12 into 13 डिवाइड बाय comes out to be 13 into 6 is 78. So 10 plus 11 plus 78, 21 plus 78, the answer option. Let's go for the next one. This one was quite tricky क्योंकि यहाँ पे हमें मैन्युअली सारे केसेस लेने थे एंड सॉल्व करना था. Try for this. For how many integers n will the inequality n minus 5, n minus 10, this inequality is satisfied? This one is easy. Again a theta question. Theta questions, if you try for it, most of the time ये easy आने के chances होते हैं. n minus 5 into n minus 10 minus 3 times of n minus 2 less than or equal to 0. Even if you just solve it, be able to understand एक quadratic equation या कुछ बनने के chances लग रहे हैं यहाँ पे, right? So let's try. क्या बनेगा n square minus 5n minus 10n plus 50 minus 5 into 10 minus 3n plus 6 less than or equal to. Then solve this. This is 5n, 15n, 18n, n square minus 18n plus 50 must be less than or equal to. Guys देखो ये बिल्कुल quadratic equation का question है. That's an easy one. So how many values, what are the roots of the quadratic equation? This is 7 8s of 56 होता है, तो 7 into 2 into 2 into 2, 7 8s of 56. So if we do 14 and 2, so roots are numbers are minus 14 into minus 4. अगर हम multiply करते हैं तो हमें मिलता है 56. Addition will be minus 18. So value of n will be 14 or 4. ये एक बार तुम्हें मिल गया ना. इसका मतलब क्या है सुनो, अभी 14 और 4 तो रूट्स है. अगर कितने लोगों को ये ग्राफ से ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा गाइस, लिसन, लोगों को नहीं समझता है. द ग्राफ of quadratic equation is a parabola, right? Of course this is going to be upward moving parabola. ये a पॉजिटिव है, then रूट हमें मिल गया 4 and 14, तो ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा, right? So that will cut your 4 and 14 एक्सिस पे. अब यहाँ पे ये ग्राफ जो है, दिस इज द नेगेटिव वैल्यू, इतने पार्ट में ये नेगेटिव जा रहा है एंड यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0, 4 पे भी 0 है, 14 पे भी 0 है
and anywhere between any values for 5 6 7, इन सारे वैल्यूज के लिए एक्स एक्सिस के नीचे, मतलब ये नेगेटिव में है, राइट, बाय नेगेटिव दिखाएगा। तो 4 से लेके 14 तक जितने इंटीजर्स वाले दैट वी नीड टू काउंट 4 to 14 इंक्लूडिंग 4 and 14, बिकॉज यहाँ पे लेस देन बोला रहता तो हम 4 and 14 एक्सक्लूड कर देते, बट दिस इज लेस देन और इक्वल टू मीन्स इट कैन बी 0 एज वेल, सो 4 भी चलेगा 14 भी चलेगा। तो फ्रॉम 1 से लेके 14 तक 14 होते हैं, तो स्टार्टिंग के 1 2 3 3 नहीं आए, so that answer is 11। that is really a simple question on quadratic equation, you can say। थोड़ा सा ग्राफिकल तुम्हें यूज करना पड़ेगा क्योंकि वो इंटीजर वैल्यूज हमें चेक करना, राइट, इजी वन। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। So the question from functions, but not related to function, basically f1x f2x ऐसे लिखा है, बट यहाँ पे क्या दिया है कि दोनों फंक्शंस इक्वल है, सो सिंपली यू कैन कंपेयर दिस x square plus 11x plus n equal to x, and the largest possible value of n for which it has the two distinct real roots। again this is a question of quadratic equation, theta question है, बिल्कुल easy question था ये। x square plus 11x plus n must be equal to x, so if you solve this, x square plus 10x plus n equal to 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स कब आते हैं, ये अगर तुम्हें याद है, रियल रूट्स कब आते हैं गाइस, जब डिस्क्रिमिनेंट पार्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, राइट। has two distinct real roots। ग्रेटर देन 0 मतलब बी स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट इन द सेंस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। नाउ व्हाट इज b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b is 10, a is 1, c is n, so b square is 10 square, that is 100 minus 4 into a is 1 and c is n, this must be greater than 0, that simply means 100 must be greater than 4 times of n, so n must be less than 25, n must be less than 25। so what is the largest possible value of n, n 25 नहीं चलेगा, 25 से कम होना चाहिए। लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू क्या होगा, इट शुड बी 24, 25 से कम होना चाहिए ना, एंड दैट शुड बी एन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड कैन बी 24। Hopefully you understood this। the only thing you need to understand is the discriminant part to get the real roots of the two quadratic equation, that b square minus 4ac is must be greater than 0। and why this is happen guys, because why this happen, why we are taking discriminant as greater than 0, क्योंकि क्या होगा, we know the roots के लिए क्या फॉर्मूला है गाइस, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। द थिंग इज ये अगर पॉजिटिव नंबर है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट आया पॉजिटिव नंबर का तो डेफिनेटली ये प्लस माइनस होगा और दो रियल रूट्स मिलेंगे हमें, राइट। तो बी स्क्वायर, उसके लिए क्या होगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ गया तो ये इमेजिनरी में चला जाएगा, राइट। अगर ये 0 हो गया तो फिर ये प्लस माइनस आएगा ही नहीं, सिंपली एक आइडेंटिकल रूट आएगा। तो इक्वल हमें दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स चाहिए थे, तो सबसे पहले तो ये रियल रूट्स मतलब ग्रेटर देन मींस नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, बिकॉज आइडेंटिकल रूट्स आएंगे, टू डिस्टिंक्ट रूट चाहिए, तो हमें इसको लेना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन 0। दैट्स द सिंपल लॉजिक बिहाइंड दैट एंड रियली अ इजी क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू should be able to tackle these type of questions in CAT। so quadratic equations पे था ये, so let's move to the next one। try for this। this one is a bit logical। I cannot say it's too much of easy, but definitely तुम थोड़ा सोचोगे, concept अगर है means थोड़ा logically connect कर पाओगे
तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, बिकॉज देर इज नो स्टेप बाय स्टेप वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज सच. Guys, A, B, C, D positive integers. That's what we know. Sorry, not positive integers, just integers हमें दिया है. पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ. The minimum possible value of a minus b square plus a minus c square plus a minus d. And we know a plus b plus c plus d. Can you think about it? तो गाइस इन दिस क्वेश्चन एक चीज में मुझे समझ में आता है कि अगर मुझे नंबर्स में आसपास के रखूंगा, मींस माय लॉजिक इज समथिंग लाइक दिस, कि अगर मुझे ये मिनिमाइज करना है तो ए और बी बहुत पास पास के नंबर होने चाहिए, तो ये डिफरेंस कम आएगा. ए और सी भी बहुत क्लोज नंबर होने, मतलब ए बी के भी क्लोज होना चाहिए, सी के भी क्लोज होना चाहिए और डी के भी क्लोज होना चाहिए. तो कैन वी टेक सम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. कंसेक्यूटिव नंबर्स में अभी तुम 8 9 10 11 ऐसे कुछ ट्राई करोगे तो एडिशन ज्यादा आएगा. एडिशन हमें सिर्फ 30 चाहिए. अगर तुम 8 9 10 11 ट्राई करने चाहोगे तो दिस एडिशन कम्स आउट टू बी दिस विल बी मोर देन 30 देन, राइट. 19 प्लस 38 जा रहा है. डेफिनेटली नंबर्स तो थोड़े से कम होंगे, या फिर तुम एवरेज भी ले सकते हो. 30 डिवाइड बाई 4 कितना होता है, 7.5 होता है. तो नंबर्स, चारों नंबर 7 के आसपास रखेंगे तो भी चल जाएगा. हमें ट्राई करना है कि ये कम से कम हो जाए, राइट. ये डिफरेंस दोनों नंबर्स में कम आ जाए, राइट. तो सम ऑफ मे थिंक अबाउट दिस 6 7 8. दिस इज द कॉमन थिंग स्टूडेंट डू. They think of the consecutive number, and the coincidence is if you look at the number 6 plus 7 plus 8 plus 9, if you add it, it is exactly it's exactly 30. तो 30 तो हो रहा है. अभी हमें पता है कि इसमें से कोई ना कोई एक a होना चाहिए. तो a का वैल्यू अब तुम कहीं भी रखो, दो नंबर से a पास में होना चाहिए. a अगर यहाँ पे a का वैल्यू अगर 7 लेते हैं तो ये 8 से 1 का डिफरेंस आएगा, यहाँ से 1 का डिफरेंस आएगा, बट यहाँ से 2 का डिफरेंस आएगा. तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एंड दैट कम्स आउट टू बी 1 प्लस 1 प्लस 4, दैट कम्स आउट टू बी 6. बट द थिंग इज हमें चाहिए मिनिमम पॉसिबल. क्या हमने ये निकाला, हमें गारंटी है कि यही मिनिमम पॉसिबल होगा? नो, नॉट गारंटीड, बिकॉज ये एक अजम्पशन हो गया. एक और अजम्पशन हो गया. देयर इज नथिंग रिटन दैट ए बी सी डी तीनों चारों डिफरेंट होने चाहिए, ऐसे कहीं पे लिखा है क्या? नहीं. कंडीशन सिर्फ है कि वो इंटीजर्स होनी चाहिए. और हमने ये ट्राई करना चाहिए कि अगर डिफरेंट इंटीजर्स रहते तो कुछ ऐसे इस वे में सोच सकते थे, बट हमें डिफरेंट इंटीजर्स लेना ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं है. तो तुम दो नंबर्स को सेम लेके डिफरेंस भी जीरो कर सकते हो, सो दैट एक का डिफरेंस जीरो करेंगे तो और भी कम हो सकता है. तो यू कैन ट्राई फॉर द नंबर्स लाइक, बट कुछ तो लेना पड़ेगा. दो कॉन्जिक्यूटिव तो नंबर्स लेने पड़ेंगे, सबको सेम तो नहीं, 7.5 तो नहीं हो सकता है. तो 7 8 15 हो रहा है, तो और एक बार 7 8 लेते हैं, 15 15. नाउ कैन वी ट्राई फॉर दिस. अगर मैं ये लेता हूँ a एंड देन b c d, तो a माइनस b ये डिफरेंस हो गया 1, a माइनस c दिस डिफरेंस इज, दिस इज 1. तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, दैट जस्ट कम्स आउट टू बी 1 प्लस 1 2. इससे कम तो होने का कोई चांस नहीं है गाइस. आंसर वाज 2. So if you can think of numbers like this one is the easy question, and otherwise, but अगर तुम्हें नहीं ट्रायल एंड एरर करते हैं तो फिर ये टफ क्वेश्चन भी. Totally depends on you, how good at you, how good you are at numbers and adding, calculation part. That's a bit tricky, you can say. And this is not the question which you can solve by solving equations and all. There is nothing. It's based on trial and error. And this is the way you should solve in.
chalo, let's go for the next one. Let A B C D E F G H and J K be 5 diameters circles. Center at O. In how many ways can 3 points be chosen out of this? तो बेसिकली 5 डायमीटर है तो दो दो एंड पॉइंट्स होंगे सर्कमफरेंस पे, टोटल सर्कमफरेंस पे 10 पॉइंट्स है. Complete circumference of the circle, there are 10 points. 1 2 there are 10 points on the circumference and 1 point at the center. So in how many ways can I select 3 points? Select means basically all 10 points are non-collinear, but the ये पॉइंट जो है ना ये हर बार किसी ना किसी डायमीटर के बीच में आता रहेगा, राइट? दिस वे ये डायमीटर सेंटर सर्कल पे आएगा. तो अगर तुम ये ट्रायंगल नहीं बनेगा व्हेन यू कनेक्ट पॉइंट्स आर द एंड पॉइंट्स ऑफ अ सेम डायमीटर, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा. ओके, selection of 3 points, but let's consider all these points are non-collinear, and if you are given with a non-collinear points, तो simply तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? select 3 points out of 11. so answer must be 11C. that comes out to be 11 into 10 into 9 on 3 into 2 into 1. So it is 330 divided by 2, 5. 165 is not the right answer because इसमें से देखो ये 3 पॉइंट कनेक्ट करने पे कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है. ये तीनों पॉइंट कनेक्ट करोगे जब तुम डायमीटर एंड सेंटर, डायमीटर जितने हैं उतनी बार वो ट्रायंगल नहीं बनेगा. दैट विल बी जस्ट अ स्ट्रेट लाइन, राइट? So that's why हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा. 11C3 minus 5, 11C3 minus 5, which will be 165 minus 5. That is 165 minus 5. 160 answer है इसका. That was a really easy question that you can manage to solve within 30. So guys, in quantitative ability you need to pick such questions, save on your time and get the questions correct. इस टाइप के questions तो definitely correct होने चाहिए. Let's move to the next one. The shortest distance of the point 0.5 and 1 है वो, so 1 by 2 and 1 from the curve. So guys, ये question बिल्कुल simple question है, but the thing is it totally depends how good at how good you are at graph. इस तुम अगर ग्राफ ड्रॉ कर पाते हो, वो कर्व के बारे में दिया, राइट? तो कैन यू जस्ट थिंक ऑफ सम वैल्यूज, जैसे हम पैराबोला ड्रॉ करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, लीनियर इक्वेशन के लिए हम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना सकते हैं. सो इफ यू नो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, you can just pick few points and draw the graph. Okay, so let's try to draw it. Okay, for this graph curve. Okay, let's take x as 0. x का वैल्यू जब 0 रहेगा, ये भी 0 हो गया. दिस विल mod of -1 will be 1 plus 1 plus 1 will be 2, y is 2. So can I say x0 and y2, this will be the point on this curve, right? The first point on this curve will be 0, x and y. Y must be 2, x is 0. Then the next point on this curve, if I take x as 1 or -1, try for 1. 0 के लिए हमने ट्राई किया, -1 के लिए भी करूँ. 1, x को 1 लेते हैं, so let's try for 1 minus 1 is 0, then 1 plus 1 is 2. Again ये 2 आ गया. Will be the point on the graph. Even if you go for -1, तो ये -1 -1 -2 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा, तो वापस से mod of -2 will be 2.
तो यहाँ पे भी ये 2 आ रहा है, राइट। देन अगर कोई 3 के लिए जाएगा, 2 के लिए जाते हैं और -2 के लिए जाते हैं, एक बार 2 - 1 will be 1 and 2 + 1 will be 3, 1 + 3 will be 4. तो अभी ऊपर जा रहा है, राइट। सो दिस विल बी द पॉइंट ऑन दिस ग्राफ, 1 2 -1 2। नेक्स्ट पॉइंट मुझे मिला और 2 के साथ 4, दिस द पॉइंट 2 4। एंड अगर -2 ट्राई करता हूँ, -2 will be again 4, -2 के साथ भी 4 आएगा। so this is the graph, it looks like this। अब यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे ये जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन बन, अगर किसी ने 0.5 पे ट्राई करके देखा ना, 0.5 पे, और 0.5 यहाँ पे रख दो, 0.1.5 -0.5, देखो वापस ये 2 ही आएगा। तो दिस इज द, अब मुझे पता है कि ये पॉइंट इस पॉइंट से हाफ एंड वन पॉइंट यहाँ पे होगा, हाफ एंड वन विल बी हियर। इस पॉइंट से इस कर्व का मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम हियर विल बी डेफिनेटली, ये टोटल 2 है तो यहाँ पे 1 हो, has to be 1। that's an easy thing, if you know the graph plotting, that's the question for you। Okay, so let's speed up and solve few more questions। try for this one, or the square of the 7th term of arithmetic progression. What is the 7th term of arithmetic progression? The nth term of arithmetic progression is a plus n minus, right? So the square of the 7th term of the arithmetic progression, that is a plus 6d whole square, must be equal to the square of the 7th term of the arithmetic, positive common difference, equals to the product of the 3rd and 17th term। Okay, so the same progression का 3rd and 17th term को हमें multiply करना है, must be equal to 3rd term into 17th। 3rd term is a plus 2d and 17th term is a plus 16। Then the ratio of first term is a and the common difference is d, so we need to find what is the ratio of a। that's quite easy guys। के बाद तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन बन गया, राइट। तुम्हारे पास इक्वेशन है, गेट द वैल्यू ऑफ, गेट द ए और डी के वैल्यूज नहीं चाहिए, जस्ट गेट द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ ए टू डी हमें पूछा है, राइट। so what you can do, just a plus b whole square, it is a square plus 36d square 6 square plus 2ab कर देता हूं मैं, plus 2 into 6 is 12ad must be equal to a square plus 16ad plus 2ad plus 16 into 2 32d square। चार टर्म आ गए, ए स्क्वायर डेफिनेटली इधर आके माइनस हो जाएगा तो 0 हो गया। 32d स्क्वायर में से इधर 36 है, इधर लेके माइनस कर देते तो इधर बचेगा 4d स्क्वायर, और यहाँ पे 18ad है, ये 12ad उधर ले जाते हैं, दिस विल बी 6ad। दैट्स द इजीएस्ट क्वेश्चन यू कैन हैव इन कैट गाइस। बिल्कुल तुम्हें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक पता होना चाहिए, दैट्स इट, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन।
then this d square एक d cancel हो जाएगा, so can I say 4d is equal to 6a, so 4 upon 6 equal to a upon d, so I'm getting the ratio as 2:3. So a d, that's let's speed up. Next one. How many ways can 7 identical erasers be distributed among the 4 kids? ये distribution मैंने पहले भी permutation combination में काफी बार पढ़ाया है, and hopefully all of you remember that. 7 erasers है guys. Just forget about this last condition. Nobody gets more than 3 erasers. अगर मैं इतना part हटा देता हूँ, okay. So I want to divide 7 erasers. So there are 7 erasers. I'll just represent it by 7 sticks. Okay, I'll just draw 7 sticks. Assume that this is 1 eraser, this is 1 eraser, 1 eraser. Total 7 erasers रखे हुए हैं. हमको इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो मैं यहाँ पे प्लस साइन रख देता हूँ, 3 प्लस साइन में कहीं भी रख देता हूँ. तो क्या ग्रुपिंग बना 1 2, राइट. अगर मैं ये प्लस साइन का पोजीशन चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, क्या ग्रुपिंग बनेगा 1 3 इरेजर्स इधर बचेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 इरेजर्स. तो बेसिकली हमें करना क्या है, आई जस्ट टू पुट 3 प्लस साइंस in between these gaps. So how many gaps I do have? 1 2 3 4 5 and 6 gaps. In how many ways I can put 3 plus signs? Can select 3 gaps out of 6. In how many ways can I select 3 gaps out of 6? It is 6 3, that is 6 into 5 4 on 3 into 2. That's quite easy, but answer is not 20 guys. ये हुआ नॉर्मल आंसर 20. इसमें सब कुछ आ गया, मीन्स किसी को 4 भी इरेजर्स मिल सकते, किसी को 5 इरेजर्स भी 5 तो नहीं मिलेंगे, ये टोटल 7 ही है, राइट. क्योंकि हर किसी को एक तो मिलना चाहिए ना, एटलीस्ट 1 इरेजर दिया है नेचुरल नंबर के साथ. ओके, तो अब हमें ऐसे नहीं चलेगा कि कुछ 4 किड में से एक को 4 इरेजर मिल गए और बचे हुए लोगों को 1 1 1, ऐसे नहीं चलेगा. तो ऐसे कितनी बार हुआ होगा, 20 में से ऐसे पार्टीशंस, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस अपने कितनी बार हुए होंगे? 4 1 1 1, या फिर 1 4 1 1 1 1 1 4, या फिर 1 1 4 1, ऐसे कुछ हुआ होगा. ये 4 वेज में प्लस साइन हमने जब पुट किया, ये 4 हमें नहीं चलेंगे. तो हमारा आंसर कितना था? 20 में से ये 4 वेज हमें माइनस करना पड़ेगा. मोर देन 3 नहीं चलेगा, 3 चलेगा. ओके, मोर देन 3 नहीं चलेगा, 4 नहीं चलेगा. सो 20 माइनस 4, दैट कम्स आउट टू बी 16. बट एक मॉडिफिकेशन के साथ ये डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आया था. दिस इज द कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन टाइप फ्रॉम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन related to the distribution. Good evening Jagdeep, how are you? So guys, let's go for this last few questions from CAT 2017 slot 1. It looks the question of functions, but this is the really easy question you can have. देखो, पहले तो f of x, यहाँ पे हमें चाहिए g of f of 3. Do you know how to solve the functions? ओके, तुम्हारे ग्रेजुएशन एग्जाम्स चल रहे हैं. ओके,
f of x is 5x plus 2 divided by 3x minus 5. Okay, so can you just tell me what is the value of f of 3? f of 3 मतलब x की जगह पे हमें 3 रख देना है, that's it. Okay, yes, that's it, right Jagdeep? चलो quickly do it. 5 into 3 plus 2 upon 3 to 3 minus 5, that comes out to be 15 plus 2. You can directly do it, that's not a big deal. 15 plus 2 is 17 and 17 divided by 3 into 3, 9 minus 5 is 4, 17 by 4, right? So what is the, अभी हमें कैलकुलेट करना है g of x पे मैं आ ही नहीं रहा होगा, मैंने सिर्फ f of 3 कैलकुलेट किया. आफ्टर दैट कैन आई गेट द वैल्यू ऑफ f of 3? ओके, इसका वैल्यू अगर चाहिए तो दिस सिंपली मींस f of 3 का वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, दैट इज 17 by 4. सो कैन आई जस्ट कैलकुलेट वन मोर टाइम व्हाट इज f of 17 by 4? नाउ वापस से आ जाओ अपने ओरिजिनल फंक्शन पे एंड x का वैल्यू हमें पुट करना है 17 by 4. आर यू गेटिंग दिस? और द नेक्स्ट स्टेप, जगदीप नेक्स्ट स्टेप समझ में आ रहा है तुम्हें? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ f of 17 by 4? This will be 5 into 17 by 4 plus 2 divided by 3 into 17 by 4 minus 5. Do the calculation part quickly. Denominator में 4 दोनों जगह आएगा. 17 5 85 plus 8. 85 plus 8, that comes out to be 93 by 4. And this will be 51 minus 20. Comes out to be 31 by 4. 4 gets cancelled and finally you're getting this as 3. So what I got is f of 3. This is 3. And the last part, now you're supposed to calculate this one. तो इसका वैल्यू तो हमारा 3 आ गया, तो इसका वैल्यू तो 3 आ गया, तो हमें सिर्फ g of 3 निकालना है, दैट्स इट. तो फाइनल आंसर विल बी दिस, फाइनल विल बी जस्ट g of 3 एंड g of x हमें दिया हुआ है. g of 3 will be the final answer. 3 square minus 2 into 3 minus 1, which is 9 minus 6 minus 1, comes out to be 2. Answer option. Is it easy? Right? All these are questions from CAT 2017 and you must solve it guys. ठीक है, तो मैं slot 1 पे हूँ अभी, मैंने just start किया लास्ट डे, लास्ट एक सेशन हुआ slot 1 पे जगदीप. तो जहाँ पे मैंने half of the question, I took 17 question, total 34 questions रहते हैं. So I took 17 question per day. Slot 1 completed today. I guess just last 1 or 2 question बचा होगा. So let's go for. Then I'll start with the slot 2 from CAT 2017 only. Then we'll finish with slot 2. Then we'll go to 2018, then 2019. So that's what the target is for a week. I'll try to cover all the questions from last 3 years. So this one. Again, a question from arithmetic progression. So if you don't know what is arithmetic progression, I can just quickly give you idea what is arithmetic progression. Arithmetic progression क्या होता है? If we start with the first term as a and the difference is d, the next term will be a plus d. Next to next will be a plus 3d. Hopefully you know that. तो व्हाट विल बी द, अगर मैं तुम्हें ये पूछूंगा कि 10th टर्म क्या आएगा, देखो फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म इज a plus d, थर्ड टर्म इज a plus, सॉरी थर्ड टर्म इट वोंट बी 3d, थर्ड टर्म विल बी a plus 2d एंड फोर्थ टर्म जो आएगा वो आएगा a plus 3d. तो अगर मैं तुम्हें 10th टर्म पूछूंगा डायरेक्टली तो इट वोंट बी a plus 10d, इट विल बी a plus 9 टाइम्स ऑफ द डिफरेंस. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब डिफरेंस कांस्टेंट होता है.
QA में provided means students can attempt as good as means even 30 questions भी attempt करते हैं student correctly. So you can target more in quantitative ability. Definitely it is a scoring thing. Do not just try to cross the line. तो तुम ज़्यादा अच्छा कर सकते हो तो इसमें बिल्कुल 30 क्वेश्चंस तक तुम करेक्टली सॉल्व कर सकते हो. दैट इज सफिशिएंट टाइम गिवन दैट यू नो द ट्रिक्स एंड टेक्निक्स एंड यू हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट एंड डिफरेंट क्वेश्चंस तुमने किए हैं. बट एटलीस्ट यू शुड टारगेट फॉर 27 क्वेश्चंस. That should be, and that too correct. You can target for with a 90% accuracy, means you can 25, 30 on the higher version, higher what I'm saying. Do not keep a target just to get 17, 18 questions because उतना वैसे भी manageable है. If you are well prepared, तो definitely तुम इसमें ज़्यादा target कर सकते हो. Not like LRDI. LRDI में हमें बिल्कुल थोड़ा सा questions lengthy होते हैं, समझना पड़ता है. In quant section, you can just read the question, and if you feel, you can just keep it and go for the next one. So definitely you can attempt all the questions and get 25, 27 questions correct. Okay, I totally skip geometry. No, I won't suggest to skip the geometry because listen, Jagdeep, what will happen? There will be 7 to 8 questions on geometry. Okay, अगर ज्योमेट्री में 7 क्वेश्चंस आते हैं एंड आई एम क्वाइट श्योर जो स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट सिर्फ बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री भी पढ़ के जाएगा ना तो भी उसमें से 3 to 4 क्वेश्चन बिल्कुल इजी होंगे. ओके, 3 और 4 क्वेश्चन डजेंट मैटर. तुमने ज्योमेट्री हाई लेवल पे प्रिपेयर नहीं किया तो भी चलेगा, बट डेफिनेटली 7 में से 3 से 4 क्वेश्चंस वो सॉल्व करने चाहिए. ओके, डू नॉट स्किप. मीन्स ऐसे नहीं होना चाहिए तुम एग्जाम में ज्योमेट्री दिखती अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो. देयर विल बी 3-4 क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योमेट्री जो बिल्कुल इजी होंगे, एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस. So do not skip on that because that matters a lot. You cannot skip any of the module. Means ऐसे मत सोचो कि ज्योमेट्री छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस तुम कर लोगे. और ऐसे हो सकता है कि जो तुमने प्रिपेयर किए उस टॉपिक पे टफ क्वेश्चन आ गए और ज्योमेट्री पे इजी क्वेश्चंस आ गए तो डेफिनेटली योर परसेंटाइल विल बी अफेक्टेड बैडली. अगर तुम ऐसे कुछ करोगे तो ज्योमेट्री पे इजी आएंगे या टफ आएंगे ये थोड़ी हमें पता है. अगर ज्योमेट्री पे टफ क्वेश्चन आते हैं और तुमने स्किप कर दिया तो तुम्हारा लक हो गया, राइट. इजी क्वेश्चंस आते हैं तो हमें स्किप नहीं करना है. ओके, सो दिस द nth टर्म के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए फॉर्मूले में दे देता हूँ क्विकली. सो बेस्ड ऑन दिस जो मैंने अभी बताया, होपफुली ऑल ऑफ यू रिमेंबर दैट फॉर्मूले. nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी a plus n minus 1 into d, and sum of arithmetic progression formula is n by 2 in bracket twice of a plus n minus 1 into d. So anyways मैं progression जब पढ़ाऊंगा तो I'll be taking this topic in detail and I'll teach you कि ये formula कैसे आए हैं. As of now you can remember and most of the student को ये पता भी होता है. That's a really simple topic, progression, arithmetic progression and geometric progression. So soon I'll be covering those things. And to prepare geometry, it's not a big deal. Even if you just watch the sessions that I have covered, I have taken almost 7-8 hours के लिए मैंने geometry के 4 sessions या 5 sessions करवाए थे. Just go through those sessions, you'll get the fair idea and will be able to manage at least half of the questions whatever comes in CAT. Okay, so this is the formula. Then we are given with that a1 a2 a3 up to 3n तक दिया है. तो 3n का वैल्यू मैं लेता हूँ k और समथिंग लेट्स से x ले लेते हैं एंड दैट इज द नंबर ऑफ टर्म्स, राइट. तो सम ऑफ AP के लिए फॉर्मूला क्या होगा, x by 2 in bracket twice of the first term is 3, second term is a2, the difference is 4. तो द वैल्यू ऑफ dp हमें पता है 4, तो 3 प्लस सॉरी ट्वाइस ऑफ 3 होगा सम का फॉर्मूला, ट्वाइस ऑफ 3 प्लस
n minus 1 x minus 1 into difference, d difference is 4 1830 ये होना चाहिए. तो जस्ट हमें वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करना है. दैट्स इट. x by 2 in bracket 6 plus 4x minus 4, that comes out to be 1830. 6 minus 4 is 2, x in bracket 2 plus 4x plus 4x is 1 3660. This comes out to be x square equal to 3660. You need to from the quadratic equation and solve it. It has 2x square plus x equal to 30. Yes, so what will the value here? क्या लग रहा है, क्या आएगा? x into x plus 2 must be 18. Just a minute, let me just check the calculation part one. Sum of AP is given as 1830 and we are doing 3n. I'll take 3n as x. So this will be x by 2 in bracket 3 plus 3 2a plus minus 1 into 4. This must be equal to 183. Okay, let's do it by some other way. Let's not get into that quadratic. थोड़ा सा different try करके देखते हैं. x into bracket में क्या बचेगा? 6 plus 4x minus 2 or 4x minus 4 will be equal to 3660, right? So this is x in bracket 2 plus 4x. 2 plus 4x, this must be equal to 36. Comes out to be x in bracket 1 plus 2x easy. ओके, सो क्वाड्रेटिक से ही करते हैं. चलो 2x square plus x minus 1830 must be 0. Okay, I do have one trick here, Jagdeep. Have you solved this quadratic equation? No. Need not to get into the formula. Listen to my trick. देखो मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए जगदीप हमें?
2 into 1830, 2 into 1830 मीन्स माइनस 3660 हमें मल्टीप्लीकेशन चाहिए एंड हमें एडिशन चाहिए 1. ओके, तो एक नंबर नेगेटिव होगा, एक नंबर पॉजिटिव होगा एंड द एडिशन इज 1. 3n का वैल्यू मैंने x लिया था, पहले लिख देता हूं मैं. ओके, एडिशन 1 चाहिए, मतलब कहना इससे जगदीप ये कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स. नंबर्स मस्ट बी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स. कैन यू टेल मी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स जिनका मल्टीप्लीकेशन 3660 होगा? दो नंबर्स जो कंसेक्यूटिव है एक के बाद एक, जैसे 4 5 6 7 8 9 10 11, तभी डिफरेंस 1 आएगा ना, राइट? So I have one trick to get those number. What you need to do, 3660 कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में आता है? Yes, so which are the perfect square? कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आएगा? 60 स्क्वायर इज 3600, दिस इज 60 स्क्वायर एंड 61 स्क्वायर. Are you getting that? Yes, so that is the only thing. तो एक नंबर 61 होगा और एक नंबर -60 होगा. इफ यू मल्टीप्लाई, if it is a multiple means if it is a product of consecutive numbers, तो वो उन दो numbers के बीच में ही आएगा. That's the trick. Okay, so this is the way you can try for that. So the value of x will be, देखो guys, इसको हाफ भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 है. तो वैल्यू ऑफ x मस्ट बी, ये नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा, 60 डिवाइड बाय 2 विच कम्स आउट टू बी 30. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा वैल्यू आ गया 30. x इज 30, दैट सिंपली मीन्स 3n इज 30. 3n अगर 30 है तो n का वैल्यू हमें मिलेगा 10. ऑल क्लियर? राइट? I'll erase all this part now. अभी सिंपली हमें क्या करना है, m से मल्टीप्लाई करना है. एक लास्ट एक वापस से फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा इस पे, a से लेके an तक ये एडिशन कितना आएगा? n is 10, so we can use the formula. It has 10 by 2 in bracket 2 into 3 plus 9 into 4. Solve this. 2 into 3 is 6, 9 4s are 36, comes out to be 10 into 42 divided by 2, that is 210, right? We put n as 10 and got this sum. So m into 210, ये जो है ये आना चाहिए, this must be greater than 1830. That simply means m must be greater than 183 divided by 21. 61, 7 8s are 56. M must be greater than 61 by 7. That comes out to be 8. 8 point something से greater. So the smallest possible value of m, क्या होगा smallest possible value of m? What will be the smallest? Hello, how are you? Smallest possible आंसर 8 नहीं देना है, आंसर 9 आएगा. इससे ज्यादा होना चाहिए. It should be greater than this. Okay, 8.6 से ज्यादा, that should be 9. नेक्स्ट जगदीप, आंसर 8 नहीं है.
m should be greater than 61/7. 61/7 जितना आएगा उससे ज्यादा होना चाहिए m. अरे क्लियर? आंसर इतना सब सॉल्व करने के बाद आंसर 8 मार्क नहीं करना है, राइट? दिस इज व्हाट हैपन इन एग्जाम. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सॉल्व इट करेक्टली एंड फाइनल आंसर टिक करते हुए तुम 8 टिक कर रहे हो, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं. क्लियर? आंसर इज 9. Yes. Okay, so that's it for the day, guys. I have completed slot 1 here. So next target tomorrow I'll be starting with CAT 2017 slot 2. Again वो दो पार्ट में होगा. पार्ट 1 में मैं 17 क्वेश्चन, हाफ ऑफ द क्वेश्चन कर लूंगा, हाफ ऑफ द क्वेश्चन परसों लूंगा. सो दो पार्ट में वी आर कंप्लीटिंग 1 slot. ठीक है. Then we'll start with 2018 के दो slot 1, slot 2, and then we'll come to 2019. That is the last part. That's it for the day. If you are willing to go for the plus subscription of Unacademy, you can use this code SHAM1 to avail 10% of discount. Done, guys. Good night, all of you.